बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है अहमद नदीम कासमी की जो नज़म है द फीड, जो कि उर्दू में इसका जो लफ्ज़ है असल में ये उर्दू की नज़म है जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है और उर्दू में इसका जो टाइटल है वो चोगा है। चोगा यानी जो फीड किया जाता है, जो कि खुराक होती है, उसको कहा जाता है। तो अब आइए हम शुरू कर लेते हैं। 3 स्टैंज़ा है जिसके अंदर हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे और आइए हम इसको देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है रेफरेंस। तो इसमें इसी तरह है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द फीड रिटन बाय अहमद नदीम कासमी। कॉन्टेक्स्ट है द पोएम इज़ वेरी सिंपल इन मीनिंग. इट इज़ ट्रांसलेटेड पोएम फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश. इट्स title in Urdu is Choga. In this poem, the poet shows the love of Mother Sparrow for her 10 tiny young ones. They are so small that they cannot fly. इतने छोटे हैं कि वो उड़ नहीं सकते. The mother sparrow does not. The mother sparrow does out and brings a grain of the millet in her. Does out नहीं, यहाँ पे होगा goes out. The mother sparrow goes out and brings, बाहर जाती है, brings a grain of the millet in her beak to feed them. उनको फीड करने के लिए यानी अपनी चोंच में कुछ उनके लिए कुछ ले आती है. The poet advises the world to produce the grains instead of the atom bombs. बजाय एटम बम पैदा करने के और दुनिया को तबाह करने के लिए दुनिया को बचाओ और जो ज़रूरतें हैं वो उसकी पूरी करो. ये वो असल में यहाँ पे समझाना चाह रहा है. लेकिन उसके बाद हम आ जाइए इसकी स्टैंजा के ऊपर. तो स्टैंजा पहला है holding a grain of the millet in her beak, the mother sparrow has come to feed. The young ones are so tiny and small, from head to toe they are weak when they cry. In these lines, the poet shows the effort and the love of a mother sparrow for her 10 young ones. He says that mother sparrow has arrived in her nest. She is holding a grain of food in beak. यहाँ पे आप in her beak भी कर सकते हैं. In her beak. The 10 young ones are so small and weak that they can't fly and feed themselves. ना तो उड़ सकते हैं ना अपने आप को फीड कर सकते हैं. They are so small in size that when they cry they look like just beaks from head to foot. In fact, the poet depicts the problem of the shortage of food. यानी असल में खुराक की कमी की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाना चाहता है. स्टैंजा नंबर 2 है जी और इसमें है कि 1 grain to be fed to the 10 young ones to whom the mother sparrow should feed, conjoining beak with beak, with whom should she solace, fishing the atom. यानी वो उनके लिए दाना दुनका लेकर आई है और वो अब किसी को फीड करे और चोंचों के साथ चोंचों मिलाकर वो उनको देने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी वो तसल्लियाँ दे और किसी वो खिलाए क्योंकि खुराक थोड़ी है और बच्चे ज़्यादा हैं. फिशरिंग द एटम, अब वो उसको तोड़ती है एटम को. In these lines, the poet shows the feeling of the mother sparrow as she is carrying only single grain of the food which is to be fed to the 10 young ones. She is surprised and worried about the feeding her young ones. It is very difficult for her to feed them all. उसको सारों को फीड करना काफ़ी मुश्किल है. All with single grain of food. Now she thinks that to whom should she feed and to whom should she give comfort. She is breaking the grain into the tiny pieces and trying to feed them for their survival. In fact, the poet wants to say that the man has learned the procedure of breaking atom and has designed and built the atom bombs. Instead of this, the world should divert their attention towards producing and feeding the grains of the food. यानी बजाय कि एटम बम की तरफ अपनी तवज्जो लेके जाएं, खुराक की तरफ जो बेसिक नीड है, जो ज़रूरत है, जिसके बगैर रहा नहीं जा सकता, उसकी तरफ उसको तवज्जो ज़्यादा करनी चाहिए. बिकॉज पीस विल कम फ्रॉम मिटिगेटिंग द हंगर ऑफ द पीपल. यानी लोगों की भूख को जब आप कम करोगे, मिटिगेट करोगे, नॉट बाय प्रोड्यूसिंग द
एटॉमिक वेपन्स, यानी एटॉमिक वेपन्स वगैरह प्रोड्यूस करने से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, लोगों की भूख को कम करने से चीज़ें बेहतर होंगी। लें जी, और ये है तीसरा और आखिरी स्टेंजा। कहता यू हैव लर्न टू वीव एंड वेल इन a loud tone. Splitting the grains, you have learned to see life on foot. Could you split the grain? One grain to be fed to the 10 young ones. Explanation. In these lines, the poet shows the surprise of the mother sparrow for her 10 young ones. 10 young ones है यहाँ पे. She is surprised to see the reaction of 10 tiny young ones who are weeping and crying to see their mother. चीख रहे हैं, यानी अब वो जो दाना उनका लेके आए उसको भूख लगी हुई है उनको, तो वो चीख तो रहे हैं. इनफैक्ट दे आर हंग्री एंड एवरी वन ऑफ देम वॉन्ट्स टू बी फेड फर्स्ट बाय द मदर स्पैरो. हर एक चारे के पहले उसके मुंह में दाना जाए. ब्रेकिंग द फूड ग्रेन, द मदर स्पैरो टीचेस देम दैट एज यू हैव लर्न टू स्टैंड फॉर फूड ओवर हेयर, यू मस्ट लर्न द वे ऑफ लिविंग. जिंदगी गुजारने का तरीका भी सीखो. एज यू कुड नॉट ब्रेक द ग्रेन yet for yourself, तुम तो तोड़ ही नहीं सकते अपने लिए. The mother sparrow is worried about the feeding the 10 young ones with single sort of grains. यानी वो एक तरह का एक वो दाना है, उससे वो कैसे उसको पूरा करे. In fact, the poet wants to divert the attention of the world towards the problem which are rising due to the shortage of the food. यानी खुराक की कमी की वजह से जो कि प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, उसको प्रॉपर दिया नहीं जा रहा, तो उसके वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं. Instead of producing the atom bombs, the world should produce the more food for the poor one, गरीबों के लिए. The peace is only possible when everyone is at least getting basic necessities of life to live. यानी जब हर बंदे के पास बेसिक ज़रूरतें अगर उसकी पूरी हो रही होंगी तो तभी अमन आ सकता है. अगर कुछ लोग खुशहाली में हैं और कुछ लोग नहीं हैं तो फिर उसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर और वीडियो. और अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक. और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया.